हेलो एवरीवन आई होप आप लोग अच्छे हो एंड खुद का ख्याल रख रहे हो and you people are practicing problems because that is what gets you better at physics. So in this video we are going to practice more questions of wave optics. I mean in the part 1 of this video I've already covered basic concepts and also PYQs of year 2025 and 24. In here we are starting with PYQ of year 2023 and we will go down to year 2000, almost 2000. Okay, so what is the target is to practice all sort of questions that can come from this portion, that is wave optics. Okay, so I mean whatever questions we are going to get, it won't be like that is entirely different. Some will be repetition of what we have done already, just to practice things. ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन को ही आप देख लो, ये सिंपली पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास सिंगल स्लिट है जिसके थ्रू light is passing of wavelength 600 nanometer, and what will be the value of A if first minima we are getting at this angle. So you know that single slit diffraction के बारे में बात हो रही है, एंड हियर फर्स्ट मिनिमा हमें कहाँ मिल रहा है 30 डिग्री पे, और मिनिमा का कंडीशन क्या होता है, पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड लाइट, दैट इज ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्डा. सो साइन थीटा को थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा इज सिग्निफिकेंट. सो ए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिखो, साइन 30 is half and this is lambda, that is 600 nanometer. So answer will be very simple. I mean this is 1200 nanometer. So that is equal to 1.2 micrometer. Okay, so this is going to be your correct option. So this one. Now let us move ahead. एक question है, I mean this one. N polarizing seats are arranged such that each seat makes an angle of 45 degree with the preceding one. So let's say there are n seats. So first को मैंने ऐसा लिया, second ये है, third ये लिया, fourth ये लिया, and thus n number of seats are there such that this angle is your 45 degree. Now an unpolarized light of intensity I is incident. So let's say here unpolarized light is incident. आपको भी पता है कि जब पोलरॉइड के थ्रू अनपोलराइज लाइट जाता है तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, नो मैटर हाउ द पोलरॉइड इज ओरिएंटेड. ओके, सो यू विल बी गेटिंग हाफ ऑफ द इंटेंसिटी फ्रॉम द फर्स्ट पोलरॉइड. So this is I naught by 2. From the second, what value of intensity you are going to get, उसके लिए आप मैलिसिस लॉ यूज करोगे, क्योंकि मैलिसिस लॉ वी यूज ओनली फॉर पोलराइज लाइट, राइट. सो आई नॉट बाई 2 and this is your cos square theta. I naught by 2, that is incident light on the second one, and theta is 45 degree, cos square 45. So this will become how much? I naught by 2 into half. फर्दर आप करते जाओगे इसके थ्रू, इसका भी हाफ हो जाएगा. सो हाफ हाफ हो रहा है, डन. After passing through n seats, its intensity is this much. What is the value of n? So we can say that after passing through n seats, its value will be half to the power n, right? And this is equal to I naught by 64. Isn't it true? क्योंकि देखो n का value 1 रखते हो, you will be getting I naught by 2. 2 रखते हो, I naught by 4. This is correct. Done it? So actually correctly I have written it like this. Now let us solve it. I naught cancel हो गया, और 1/64 को आप क्या लिख सकते हो, हाफ टू द पावर 6. सो n का वैल्यू क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर 6. सो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी विच वन, इट शुड बी सेकेंड वन. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड. What is the question? In a Young's double slit experiment, two slits are illuminated with light of wavelength 800 nanometer. The line joining A1P is perpendicular to A1A2 as shown in the figure. If the first minimum is observed at point P, first minimum you are getting at point P, and the distance of the screen from the slit is 5 centimeter, what is the value of slit separation A? So slit separation A का वैल्यू क्या है? अब देखो हमें मिनिमम कहाँ मिल रहा है. ओके, वी आर गेटिंग मिनिमम एट दिस पॉइंट. सो सबसे पहले देखो यहाँ से आप मिडिल लाइन बना लो, रेफरेंस लाइन. सो दिस इज दिस वन. You remember part difference in terms of y? I have given you that formula. So part difference will be equal to d y by d. This is the part difference formula I have given. Okay, so yeah, this was there, and this is equal to how much? This is equal to, for it to be minimum, this part difference should be equal to lambda by 2. Okay, because we are observing what, first minimum. So first minimum के लिए तुम्हारा part difference क्या होना चाहिए, lambda by 2. So this is this thing. अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू हमें पता है, अगर a के in front है ये, then this is how much? This is d by 2, right? So y is nothing but d by 2. आप यहाँ पे directly इसको put कर दो,
d by 2, and this is equal to lambda by 2. Okay, so I mean you will get the answer. So d square is equal to how much? Lambda d. So d is equal to how much? Root under lambda d. आप lambda का वैल्यू पुट कर लो 800 नैनोमीटर and d is your how much? 5 centimeter. So this into 10 to the power minus 9 into minus 2, that is 10 to the power minus 11 root under. So this will become how much? 4 into 3 zeros, and this will become 10 to the power minus 8, means 10 to the power minus 4. So this is going to be how much? 0.4 millimeter. Okay, so this is going to be your correct answer. अगर आपको ये फॉर्मूला ना याद हो ना, अगर आपको सिंगल फॉर्मूला याद रहता है जैसे d sin थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, उससे भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे देखो d sin थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? लैम्डा बाई 2। आपको भी पता है यहाँ पे कैपिटल D तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे स्लिट विथ जो भी होगा यहाँ पे ए इज नॉट गिवन, राइट? सो डी का वैल्यू इज गिवन इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना? 800 नैनोमीटर एंड ए का वैल्यू एक्चुअली आप ऑप्शन में चले जाना, ऑप्शन में जाओ तो मिलीमीटर है, ठीक है? सो यहाँ से देखकर हम कह सकते हैं कि डी इज फार फार लेस देन कैपिटल डी। और अगर ऐसा है then we can clearly say that theta will be very small, and in that case we can say sin theta will be equal to tan theta, and then we can write here, I mean how much we can write? This can be written as tan theta, and tan theta is equal to lambda by 2, and अगर sin theta को आपने tan theta लिखा है, tan theta को आप क्या लिख सकते हो? देखो ये एंगल यहाँ से let me show you, this angle is the theta, right? And tan theta को आप क्या लिखोगे? y by d, y by d। सो सिंपली y by d कर सकते हो। अगर आप अप्रोक्सीमेशन यूज करो ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, एक्चुअली देखो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप चले जाओ, प्रीवियस टू प्रीवियस आई विल से, लेट अस डू द कंपैरिजन। जैसे प्रीवियस केस में हमारे पास वेवलेंथ ये था और ये था स्लिट विथ तुम्हारा, यहाँ पे भी a इज फार फार लेस देन कैपिटल D है ना? बट यहाँ पे तुम्हारा थीटा सिग्निफिकेंट है, सो थीटा सिग्निफिकेंट हो सकता है इवन इन दिस केस। ओके, सो वेयर टू यूज द अप्रोक्सीमेशन? अप्रोक्सीमेशन आप वहीं पे यूज करोगे जहां पे थीटा आपको क्लियरली दिख रहा हो कि छोटा है। और ये वाले केस में हमारा जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्चुअली थीटा इज गोइंग टू बी स्मॉल, और वो मैं क्यों ले रही हूँ ये भी देखने की मुझे जरूरत नहीं है। सिंपली मुझे ये देखना चाहिए कि y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d बाई 2, और d जो है ना तुम्हारा वो काफी छोटा है, मिलीमीटर के रेंज में है। सो यहाँ से अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे तो एंगल काफी छोटा होने वाला है। एक्चुअली ये काउंट हो रहा है, डन है? जैसे d is far far less than capital D, so this angle theta is what? This angle theta is basically this d and this small d by 2 in fact, and then it is this angle। अब आप सोच लो कि अगर ये बहुत बड़ा है और ये लाइन छोटा सा है, तो ये एंगल तुम्हारा क्या होने वाला है? ये एंगल होने वाला है तुम्हारा छोटा सा। दैट वी कैन अप्रोक्सीमेट हियर, डन है? और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वो एंगल ऑलरेडी 30 डिग्री था, मीन्स अगर ये d फार फार लेस देन d है उस केस में भी साइन थीटा को थीटा हमेशा नहीं लिख सकते। जैसे देखो अगर ये यहाँ पे पॉइंट होता तो ये एंगल काफी सिग्निफिकेंट हो गया है, इवन इफ स्मॉल d इज फार फार लेस देन कैपिटल D, क्योंकि जो हम एंगल ले रहे हैं वो तुम्हारा मे बी ये d के कंपैरिजन में ये वाला लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, आई मीन कंपेरेबल है। समझ रहे हो ना? सो कहाँ पे ले सकते हो, कहाँ पे नहीं ले सकते हो। दिस अप्रोक्सीमेशन वी शुड बी वेरी मच क्लियर ऑफ। डी साइन थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस होता है, और साइन थीटा को आप कब थीटा लिख सकते हो? अगर आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो तो साइन थीटा को टैन थीटा भी लिख सकते हो, और टैन थीटा को आप वाई बाई डी लिख सकते हो, ठीक है? So you should be very much careful while doing this approximation. So it's better we do the comparison and get to see things. So correct option what we have got? Okay, third one is given correct. I have got ओके, रूट 4 था ना, रूट 4 था। सो ये रूट है एक्चुअली, एंड आंसर विल बी 2 into 10 to the power minus 4, सो दैट इज योर 0.2 मिलीमीटर, राइट? सो मैंने 8 into 5 होगा ना, 4 आई मीन 8 into 5 40, 3 जीरो थे तो 10 to the power minus 8, and then 8 into 10 to the power minus, sorry, 4 into 10 to the power minus 8, so that will become 2 into 10 to the power minus 4, right? Chalo, let us move to the next. In Young's double slit experiment, position of fifth bright fringe from the central maximum is 5 centimeter. Okay, so fifth bright fringe का distance screen पे हमें बताया जा रहा है।
and that distance is how much? 5 centimeter. So let's say this is the fifth bright fringe, and its distance from here is how much? This is your 5 centimeter. Okay. The distance between slit and the screen is 1 meter, capital D, and the wavelength of monochromatic light is 600 nanometer. What is the separation between slits? So we are getting asked what will be this value. Okay. So what we can say about this thing. I mean, this is 5 centimeter. This is your 1 meter. Okay. So this is the fifth slit, fifth bright fringe. So let's say this is at an angle theta. So part difference के term में आप क्या लिखोगे? D sin theta is equal to how much? दिस एंगल स्टिल इज गोइंग टू बी स्मॉल, है ना. 5 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर अगर आप करते हो, यू विल बी गेटिंग 0.05 रेडियन, जो कि काफी छोटा है. तो साइन थीटा को आप थीटा ले सकते हो, ठीक है. सो डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 5 लैम्डा डी इंटू थीटा, and this will be equal to 5 lambda. So theta is equal to 5 lambda by d. So what will be this y? मैंने बोला है अगर आपको थीटा पता है, स्मॉल एंगल लेकर चल रहे हो, तो ये वाला जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? d into this, sorry, d into this angle, because then you will be treating this like the center and this as the radius, and this will be the arc length. Okay, so arc length is 5 centimeter, and this is equal to how much? This is equal to theta, that is 5 lambda by d into capital D. Okay, so this is this thing. Now let us put the thing. This is this. So small d is equal to how much? This is equal to lambda d. Lambda तुम्हारा क्या है? 600 into 10 to the power minus 9 into d is 1 meter. So this is going to be how much? 60 into 10 to the power minus 6. Am I right? Yeah, this will become how much? 10 to the power minus 7. Yeah, this is this. So this will be 60 micrometer, will be the correct answer. Done. So yeah, let us check. Yeah, this is the correct answer. Now let us move to this one. If the Brewster's angle for light propagating from air to glass is theta b. So चलो सबसे पहले light किधर से किधर जा रहा है? Air to glass. And for this we are defining Brewster's angle. So Brewster's angle का value आप क्या लिखोगे? Let's say this is theta b and this is this thing. You know that reflected light and refracted light के बीच में angle 90 degree होता है. This is your theta b. So this will become how much? 90 minus theta b. और यहाँ पे अगर आप directly Snell's law use करते हो, then you will be writing refractive index of air into sin theta b is equal to refractive index of glass into sine of this angle. This is 90 minus theta b, so cos of theta b it will be, and then you will be getting tan theta b is equal to how much? Mu g by mu a. So theta b is what? Tan inverse mu g by mu a. So it is said that if the Brewster's angle for light propagating from air to glass is theta b, so theta b is how much? Tan inverse mu g by mu a. Then the Brewster's angle for light propagating from glass to air will be this much. क्या ऐसा होगा? ऑपोजिट केस आपको लेना है. सो ऑपोजिट केस के लिए अगर मैं बोलूं तो मैं क्या लिखूंगी? आई मीन ग्लास टू एयर फॉर्मूला को डायरेक्टली मैं रिवर्स करती हूँ. That case, let's say I'm saying that is theta dash, and that theta dash will be equal to, you're going from glass to air. जब हम एयर से ग्लास जा रहे हैं, म्यू जी बाई म्यू ए. एयर से ग्लास जाने पे ऐसा आ रहा है, ग्लास टू एयर क्या हो जाएगा तुम्हारा? म्यू ए बाई म्यू जी. डन है. सो म्यू ए बाई म्यू जी विल बी इक्वल टू नथिंग बट 1 बाई टैन थीटा बी. डन है. एंड 1 बाई टैन थीटा बी को आप क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा बी. ओके, और या इसको आप कॉट थीटा बी लिख सकते हो. सो टैन थीटा डैश इज इक्वल टू कॉट थीटा बी, और कॉट थीटा बी को आप क्या लिख सकते हो? टैन 90 माइनस थीटा बी, because this will be nothing but cot theta b. So theta dash is equal to how much? 90 minus theta b. So this is correct. Okay. The Brewster's angle for light propagating from glass to air is tan inverse mu z. ग्लास टू एयर के लिए tan इनवर्स म्यू जी है क्या? नहीं. tan इनवर्स 1 by mu g if mu a is 1. Done है. So this doesn't look correct. This is wrong. So statement 1 is true and 2 is false. Correct option is 2. Let us check. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Done है. So yeah, this one is your correct option. Let us move ahead. An unpolarized light of intensity 2 I naught is passed through a Polaroid P and through another Polaroid Q, whose transmission axis makes an angle of 30 degree with that of P. What is the intensity of light emerging from Q? So question तो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे ही कर लोगे. Unpolarized light of intensity 2 I naught.
ये यहाँ से पास करेगा, आई नॉट होगा हाफ ऑफ दिस वन, एंड देन दिस एंगल इज हाउ मच 30 डिग्री। यहाँ से जब ये पास करेगा देन हाउ मच आई नॉट कॉस स्क्वायर 30, सो दैट इज √3/2 का स्क्वायर, सो बेसिकली 3 I0/4। सो आंसर बहुत सिंपल, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3 I0/4। आंसर इज योर सी। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। Two coherent sources of light interfere. The intensity ratio of two sources is this. This interference pattern, for this interference pattern, if this is 2 alpha plus 1 beta plus 3, what is alpha into beta? So सबसे पहले आप Imax निकाल लो। Imax तुम्हारा क्या होगा? √I1, so √4I plus √I this का square, and this will become how much? This will become 9I, done it, because this will become 2 and this will become 1, 2 plus 1 3, 3 का square, that is your 9I। So I minimum तुम्हारा क्या होगा? I minimum निकाल लो, so √4I minus √I का square, so this will become how much? This will become I, done it। Now what is Imax plus I minimum? So Imax plus I minimum is equal to 9I plus I, and what is Imax minus I minimum? 9I minus I, and this is equal to 2 alpha plus 1 divided by beta plus 3. So this is 10/8, है ना, 10/8, so this will become how much? 5/4, and this is equal to 2 alpha plus 1 by beta plus 3। So 5 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 2 plus 1 divided by 3 है तो 1 plus 3। So आप इससे कंपेयर करो 2 alpha plus 1 by beta plus 3 से। Alpha is what? Alpha is your 2 and beta is what? Beta is your 1। So alpha into beta will be equal to how much? It will be 2। So correct option should be which one? It should be B, right? Yeah, we have got it. Okay, question में कुछ नहीं करना था, putting the thing, getting the answer. Now this is going to be a bit different. In Young's double slit experiment, using monochromatic light of wavelength lambda, a glass plate of refractive index mu is equal to this, and thickness this is introduced in the path of one of the interfering beams. The intensity at the position of central maximum remains unchanged. What is the value of x? So it is said that we have this YDAC setup. There is one change here, and change is that in the path of one of the light, we are keeping one slit, sorry, uh, I mean, one plate, glass plate of refractive index this and thickness lambda x. And because of this getting kept here, still we are getting maxima at the position of central maxima. It is said, what is the value of x? तो सबसे पहले देखो, तुम्हें ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि एक के रास्ते में अगर हमने एक ग्लास प्लेट को रखा है तो अंतर क्या होने वाला है। अब देखो, जब भी हम YDAC सेटअप या इंटरफेरेंस की बात करते हो, आप डेल्टा एक्स लिखते हो, पार्ट डिफरेंस। दिस पार्ट डिफरेंस इज व्हाट? नॉट ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, दिस इज योर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। हमेशा याद रखना, दिस इज योर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। और आपको ये भी पता है कि जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होता है वो तुम्हारा क्या होता है? जैसे अगर कोई भी लाइट म्यू मीडिया में चल रही है, let's say, and it has traveled a distance of t in this media, then how much optically, how much it has traveled inside this media, you will say mu t, mu times t। but generally हमारा हमारा YDAC सेटअप तुम्हारा किस चीज में हो रहा है? एयर में हो रहा है। अगर एयर में हो रहा है तो mu is 1, so path getting traveled is equal to the geometrical length of the path। but if that is not the case, then path getting traveled by light you will be writing as mu times that geometrical length। ठीक है। सो देखो, जब यहाँ पे कोई ये सीट नहीं है, इन दैट केस लाइट इज ट्रेवलिंग how much distance? This distance, this distance, geometrical length is equal to the optical distance getting traveled because this is air, राइट। एंड ये दोनों डिस्टेंस हमारा क्या है? सेम है, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 आता था। लेकिन हमने यहाँ पे अगर एक स्लिट रख दिया, सॉरी एक सीट रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, देन व्हाट विल हैपन? जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला लेंथ आप ले लो, एल नॉट था, तो ये लेंथ भी क्या था? एल नॉट। नाउ लेट्स से इट्स थिकनेस इज टी, देन एल नॉट माइनस टी, लेंथ, एल नॉट माइनस टी लेंथ इज गेटिंग ट्रेवल्ड इन एयर, so that is equal to the optical length, done it, and t distance is getting covered in a media of refractive index mu, so effective length getting covered by first light will be equal to how much? L naught minus t plus mu t, this is the effective length, and effective length getting covered by second light will be equal to how much? L naught
only. Done. So this minus L naught you are going to do path difference. Okay. So this is going to be the delta x. और अगर आप डेल्टा एक्स को निकालो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है म्यू टी माइनस टी. So this is equal to t mu minus 1. This is the path difference, extra path difference at this point we are getting. So this point will no longer be the point of central maxima. This is going to be a different point. Maybe this is another maxima or some minima. Okay. So दिस इज गेटिंग शिफ्टेड बाय दिस थिंग. नाउ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट किधर करेगा, तो देखो फर्स्ट लाइट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए दोनों लाइट को सेम डिस्टेंस कवर करना चाहिए. सो वी विल मेक दिस फर्स्ट लाइट ट्रैवल समवेयर हियर एंड देन सेकेंड लाइट वी विल मेक इट ट्रैवल ग्रेटर सच दैट ये वाले लाइट का जो डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल लेंथ इसका कम दिखना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ऑप्टिकली इट इज ट्रैवलिंग ग्रेटर, so geometrical length should be smaller. That will, then only it will compensate uh, I mean this extra thing t mu minus 1, क्योंकि देखो सेकंड को आपको ज्यादा चलाना पड़ेगा. डन है, बिकॉज फर्स्ट बिकॉज ऑफ दिस स्लिट this seat present in its way, it is traveling this much greater because of the presence of seat, and that is why you need to make this second light travel more in order to compensate for this much. So central maxima इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, जिधर किधर शिफ्ट करता है, जिधर के लाइट में तुमने सीट को रखा है. सिंपल, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा, देन यू नीड टू चेक how many fringes is getting shifted because of this seat getting kept in the path of light. So how many fringes will get shift, देखो जब भी मैं बोलूं या क्वेश्चन बोले fringes are getting shifted, so it is talking about maximas. Okay, so I mean let's say n number of fringes are getting shifted, so t mu minus 1 will be equal to n lambda. Because अगर एक फ्रिंज शिफ्ट होता है तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स शुड बी लैम्डा, n fringes are getting shifted, it should be equal to n lambda. Okay, so this is the case. चलो अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The intensity at the position of central maximum remains unchanged. What is the value of x? So definitely this delta x is equal to n lambda, है ना, and this point is still maxima. So this is point of certain maxima. Let's say nth maxima. Delta x को आप क्या लिखोगे, with that is your lambda x into mu minus 1, 1.5 minus 1, and this is n lambda. Lambda lambda तुम्हारा cancel होगा, x into half and this is equal to n, so x is equal to 2n. डन है, n का वैल्यू आप पुट कर लो, n इज इक्वल टू 1 रखोगे पहले तो 2 मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 रखोगे 4 मिलेगा. सो बेसिकली 2 4 and 6, like that we are going to get. डन है, so n is equal to 2 will be the correct, sorry, x is equal to 2 will be the correct answer. Okay, so correct answer should be which one, it should be B. Sorted. चलो आगे बढ़ते. फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 670 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम ए गैलेक्सी मूविंग विथ वेलोसिटी v, द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इज दिस वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? ओके, no, what is the value of v? So delta lambda by lambda, if you remember, that was equal to how much? V radial divided by c. V radial was the velocity of that star with respect to the earth, sort of. So delta lambda is equal to how much? This is 670.7 minus 670, so 0.7, and this is your 670, and this is your v. Okay, because earth की velocity हम zero लेकर चलेंगे, nothing is getting talked about the observer's velocity, so that is at rest basically. So this by c, that is your 3 into 10 to the power 8. So what will be your v? So that is going to be v is equal to 0.7. So I mean इसको आप ऐसे जीरो ले लो, 2 जीरो यहाँ से 6 से कैंसिल हो जाएगा. So this is 21 into 10 to the power 6 divided by 67. ओके, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. सो अगर मैं इसको 70 मान लूं तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा. सो 3 पॉइंट और ये 70 है नहीं, दिस इज 67. ओके, सो ये 3 से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हमने इसे थोड़ा बड़ा लेकर किया तो 3 आ रहा है और ये छोटा है, तो डेफिनेटली अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर छोटा है जितना आप ले रहे हो उससे, तो वैल्यू तुम्हारा बड़ा आने वाला है. सो 3 से थोड़ा बड़ा होगा. डन है, एंड दैट ऑप्शन विल बी, आई मीन इसको अगर आप 70 लेते हो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power 5. So 3.13 into 10 to the power 5 looks correct. Okay, so correct option should be which one? C. Putting the formula, getting the answer type question, Doppler effect का question. Now let us look at this one. A light beam, okay,
A light beam whose electric field vectors are completely removed using a good Polaroid is incident on the surface of a prism at Brewster's angle. Which of the following statement correctly describe the phenomenon? अब देखो हमने completely remove कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को. अगर उसको रिमूव कर दिया है तो लाइट आप किसी भी सरफेस पे फॉल करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिमूव्ड है, देन ये एटम को इंटरैक्ट करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, देन इट वोंट जनरेट द रिफ्लेक्टेड लाइट. Okay, so no reflection you will be observing, no reflection, and there will be total transmission of light. Option D. Okay, so I will go with option D. Yeah. देन क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे जनरेट होता है. सॉर्ट ऑफ दिस एटम will interact with the electric field of light falling, and then it will start vibrating, it will generate, and that generated wave we will be getting as what reflected light. So that was the case. Now let us talk about this one. Two light beam with intensity this interfere to produce a fringe pattern on the screen. Phase difference between the beam is pi at a point and pi by 2 at point Q. So at point P, phase difference is how much? Pi, and at point Q it is how much? Pi by 2. So what is the difference between resultant intensities at P and Q? So formula याद कर लो आप. I1 plus I2 plus 2 root I2. This was your how much? Cos phi, where phi is the phase difference. So at one point phase difference is pi. So इसको अगर आप pi लिखोगे, this will become -1. ठीक है? And in that case, you are going to get how much? 9i plus I, that is your 10i minus 2 into this will become how much? 3i basically. So 3i. So this is going to be your how much? This is going to be your 4i. Done it? So this is, yeah, this is going to be your 4i. Now at point Q it will be how much? This is pi by 2. So phi को अगर आप pi by 2 रखते हो, you will be left with I1 plus I2. So at this point you will be getting 10i. Now you're getting asked difference between these two. So एक point पे है 10i, दूसरे पर है 4i. So difference is how much? 6i. So correct option will be your B. Okay, so this is your correct option. Now let us move ahead. In Young's double slit experiment, if the source of light is changed from orange to blue, then what will happen? So basically, you are changing light wavelength. Wavelength को change करने से interference pattern में क्या change आएगा? So interference pattern तो disappear नहीं होगा. To the long light is coherent, that is of single frequency. We will be getting interference pattern. So central bright fringe will become a dark fringe? No, I mean this will still stay what? सेंट्रल मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पार्ट डिफरेंस 0 है. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज. सो डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी. ओके. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच? This will be if what you are increasing wavelength क्या हो रहा है तुम्हारा? From orange to blue. So wavelength हम क्या कर रहे हैं? Wavelength is decreasing. If wavelength is decreasing, ये कम हो जाएगा. यानी कि fringes के बीच का separation घट रहा है. The distance between consecutive fringes will decrease. Yes. Distance between consecutive fringes will increase. No. Intensity of minimum will increase. नहीं. Light के wavelength को डिस्टर्ब करने से इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं होगा. इंटेंसिटी टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट इन इट, सो नो. एंड ऑल्सो ऑन द पार्ट डिफरेंस इट विल डिपेंड एट अ सर्टेन पॉइंट what will be the intensity. Okay, so no, this is quite unreasonable. So only reasonable thing we can go with is 2. Let us move ahead. In Young's double slit experiment, distance between slit varies with this thing. I mean, what is difference between largest and smallest fringe widths? So fringe width का formula आप देख लो क्या था? Lambda d by d. Okay. So greatest fringe width तुम्हें कब मिलेगा? When d will be your smallest. और देखो d तुम्हारा क्या है? कुछ simple harmonic motion perform कर रहा है. So इसका minimum value क्या होगा? When this will be your what? Minimum. And this will be minimum, I mean how much? Minus a naught. So this can be d naught minus a naught. और ये maximum कितना होगा? D naught plus a naught. ठीक है. So you have to talk about difference between the smallest fringe width and largest and the smallest. So largest fringe width तुम्हारा क्या होगा? Lambda d by d naught minus a naught, and then this is lambda d by d naught plus a naught. Simply this difference you have to calculate. So lambda d, this will become how much? D naught plus a naught. So this is going to be 2 a naught divided by
D naught का square minus A naught का square. So 2 lambda D A naught this. Okay, so second option. Let us see. Yeah, this is correct. Let us move ahead. With what speed should a galaxy move away from the Earth so that sodium D line, which has wavelength of this, is observed at this? Again, putting the formula, getting the answer type question. So B radial by C. Put the formula, you will be getting the answer. We've already solved one such sort of question. Chalo. Now let us deal with this one. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by this, and the screen is placed at what distance? 0.5 meter from the slit. Okay. The slits are illuminated with monochromatic light of this wavelength. What is distance between first and third bright fringe? So what will be the difference between first and third? अब चलो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा. सो दैट डिस्टेंस, let us say here we are getting third maxima and somewhere here we are getting first maxima. ठीक है. सो फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा के लिए तुम्हें एंगल क्या मिलने वाला है? काफी छोटा मिलने वाला है बिकॉज आई मीन डी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट यू विल बी डूइंग लैम्डा. Okay, in lambda, and here you will be doing what? Sin theta is equal to n lambda by d. So first maxima के लिए n का value 1 करोगे. Lambda is in range of what? It is in the range of angstrom and d is in range of what? This is in the range of millimeter. So ये angle काफी छोटा आने वाला है. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में आप जा सकते हो. ठीक है. सो लेट अस गो विद दैट वन. सो दिस एंगल थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 2. थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? दैट इज योर लैम्डा बाई डी. And what is the value of theta 2? Third maxima, right? So 3 lambda by d. What is the difference between angles? That is your 2 lambda by d. What will be the distance between these two? So if you know this angle, which angle I'm talking about, this one, then I mean this is the center of circle, this is the arc, this is the radius, equal to d, approximation. Okay, so distance will be equal to how much? 2 lambda by small d into capital D. Put the value. 2 into wavelength को आप क्या रखोगे? 5890. So this is 5890 into 10 to the power minus 10 divided by small d. That is equal to how much? Small d is how much? 0.5. So 0.5 into millimeter. So 10 to the power minus 3, and then this is 0.5 meter is the capital D. So this is 0.5. अब देखो इसको कट कर लो आप, and this will become how much? 10 to the power minus 7 and then 1 0 more. So 10 to the power minus 6 and multiply this with the 2. So 8 and then 7 and then 11. 11, 7, 8 into 10 to the power minus 6. So correct option should be which one? It should be second one. So second one is your correct answer. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. What we have to talk about? Consider the diffraction pattern obtained when sunlight passes through a pinhole of diameter this. If the diameter of pinhole is slightly increased, how will the diffraction pattern be affected? So let's say this is the slit and this is getting used for single slit diffraction thing. Okay, and it has a diameter of how much? 0.1 millimeter. इफ द डायमीटर इज इंक्रीज, अगर आप इस डायमीटर को इंक्रीज करोगे, देखो इससे सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है. ठीक है. अगर आप डायमीटर बढ़ाते हो तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल गो, यानी कि इंटेंसिटी मोर. सो इंटेंसिटी तो इंक्रीज होगा. जहां भी इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ है उसको आप कट कर लो पहले. सो आइदर ऑप्शन ये होगा या ये होगा. उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? आई मीन डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे अफेक्ट होगा? सो इट्स साइज विल डिक्रीज और इंक्रीज. कहने का मतलब मैक्सिमम का साइज. सो अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं तो साइज क्या था तुम्हारा? 2 लैम्डा बाई ए, एंगुलर साइज. डन है. सो आई मीन इफ यू आर इंक्रीजिंग, आई मीन दिस थिंग यू आर इंक्रीजिंग, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा. दिस विल डिक्रीज, राइट? सॉरी, what I'm saying, अगर तुम्हारा a increase हो रहा है, so this is increasing, and if this is increasing, this overall will decrease. So its size decreases, but intensity increases. So fourth will be your correct one. Okay, so yeah, this one. Now let us move ahead. In the figure below, P and Q are two equally intense coherent sources emitting radiation of wavelength 20 meter. The separation P and Q is 5 meter, and P is ahead of that of Q by 90 degree. So whatever light is coming to P is, I mean, who is ahead? Phase of P is ahead of that of Q by 90 degree. So देखो P के पास जो भी लाइट आ रही है ऐसे, और Q के पास आप लाइट लेकर जाओ
So we need to be careful here. I mean, this has to be like this. Okay. Sorry, this line. मैंने ये क्या draw किया? Actually, what I'm trying to show you is, in the question it is said that phase of P is ahead of that of Q. So P और Q का जो phase है that is not same. यानी कि देखो, जब हम single slit double slit interference करते हैं तो whatever light is coming from here, इन दोनों का phase same होता है. कहने का मतलब क्या है? When the light is striking this uh, this slit, at the same time this light is striking this slit. दोनों सेम टाइम पे स्ट्राइक कर रहे हैं. सो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस 0 है. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनका पार्ट डिफरेंस सेम नहीं है. P इज अहेड, सो P विल स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन योर व्हाट, देन योर दिस थिंग Q slit will get struck by the light. Okay, so if you want me to show here in this YDAC setup, I will do. So let us take, let me give me some time. Let us see two parallel lights coming. So light मैंने कुछ ऐसा लिया, ठीक है? And then this light is here. अब आप देखो, जब ये लाइट, आप इसको ध्यान से देखो, जब ये लाइट यहाँ पे पहुंचा है फर्स्ट वन, तो सेकंड वन यहाँ है. जब फर्स्ट लाइट यहाँ पे पहुंचा है, यानी कि स्लिट को जब वो इल्यूमिनेट किया है, एट दैट पॉइंट सेकंड लाइट हैज नॉट इट रीच द स्लिट, second slit. Okay, so that is still here. So we can clearly see that there is part difference between these two lights before striking the slit. Okay, and this part difference is equal to this one. In the question it is said that phase of P is ahead of that of Q by 90 degree. So basically P is striking before, so Q is behind by what distance? That is your lambda by 2. I mean lambda by 2, lambda by 4. क्योंकि pi by 2, this is pi by 2, इसको आप length में convert कर लो. So pi by 2 into what you will be doing? You will be doing lambda by 2 pi. So this will become equal to how much? Lambda by 4. So lambda by 4. So it is said that phase of P is ahead of Q. इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि P को और भी ज्यादा distance cover करना पड़ेगा in order to reach to the slit than that of Q. नहीं, Q पीछे है, क्योंकि phase of P is ahead. So P will strike first. So here one is striking first. This is P basically, and this is your Q. So P is striking first and Q will strike later on by covering how much more distance? Lambda by 4. Because P is ahead of Q by what angle? That is ahead of Q by an angle of 90 degree. So you have to decode it in a proper way. Done है? यहाँ पे common mistake बच्चे ये कर सकते हैं कि P को ahead लेकर P में extra length add कर सकते हैं lambda by 4. You have to be careful. P is ahead of Q. Ahead कहने का मतलब क्या है? P will strike slit before Q strikes the slit. Okay, so just you should be clear with this one. चलो, अगर तुम्हें इतना पता है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी होगा. Each equidistant from the midpoint of PQ. Okay, what is the ratio of intensities of point of radiation at A, B and C? So what will be the intensity at A, at B and C? तो चलो एक काम करते हैं, लाइट को पहले ए पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द लाइट एंड दिस इज द लाइट. ओके, I mean for point A, this light reaching at point P has to travel how much distance? So I mean यहाँ से ये distance ले लो, ठीक है, ये वाले distance को आप L नॉट ले लो, ठीक है. So ये distance तुम्हारा क्या है? L नॉट है, और ये extra कितना है तुम्हारा? Lambda by 4 है, ठीक है. So how much P has to cover? I mean how much this first light has to cover? Let us talk in this way. This is second light. First light को A तक पहुंचने के लिए कितना distance cover करना पड़ेगा? So that is L naught plus PQ plus QA. And how much this will cover? Second light, that is your L naught plus lambda by 4 plus QA. ओके, डिफरेंस आप इन दोनों का ले लो. डिफरेंस लोगे, ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा. सो दिस इज बेसिकली PQ minus lambda by 4, and PQ is equal to how much? That is given in the question. ओके, सेपरेशन बिटवीन P एंड Q इज 5 मीटर एंड वेवलेंथ इज 20 मीटर. ठीक है, सो अगर तुम्हारा वेवलेंथ 20 मीटर है तो 5 मीटर दैट इज PQ इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज योर लैम्डा बाई 4, राइट. सो दिस इज योर लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4. सो दैट इज 0. पार्ट डिफरेंस इज 0. और अगर पार्ट डिफरेंस 0 है, इट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी. इंटेंसिटी हमने दोनों का सेम लिया है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है? 4I0. आप याद करो, अगर दो स्लिट से सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है तो इंटरफेरेंस के लिए नेट इंटेंसिटी को आप क्या लिखते हो? 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2.
where delta phi is the phase difference. So path difference 0 means phase difference 0. Okay, so this is 4 I naught at point A. What will be intensity at point C? अब आप C की बात कर लो. सो सी पे देखो फर्स्ट लाइट को तुम्हें कितना चलना है, सी की मैं बात करने जा रही हूँ, ठीक है. सो हियर वी टॉक्ड अबाउट ए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सी. सो फर्स्ट लाइट कितना ट्रैवल करेगा, एल नॉट प्लस दिस इज योर पीसी. ओके, एंड सेकेंड लाइट एल नॉट प्लस लैम्डा बाई 4 plus PQ plus PC. So obviously second light is traveling more. So part difference second का first से minus कर लो. अगर करोगे ये cancel होगा, ये cancel होगा. You are left with PQ plus lambda by 4. So lambda by 4 plus PQ, that is lambda by 4, that is your lambda by 2. And lambda by 2 का मतलब angle में कितना हो गया? Lambda is 2 pi. Lambda is equivalent to 2 pi radian. So this will become equal to pi. And if this is pi, delta phi is pi, then pi by 2, this will become, this will become pi by 2, cos pi by 2 is 0. So I will be 0. So at this point, I is going to be how much? This is going to be 0. ठीक है, B point पे आप निकाल लो, B point पे तुम्हारा क्या होगा? So let us check for the part difference. यहाँ पे देखो हमें क्लियरली दिख रहा है, this is this, this is this. So whatever path difference between light 1 and 2 will be just before striking the slit. क्योंकि slit के बाद तो दोनों एक distance travel कर रहे हैं. PB and QB will be equal, right? Because this is symmetrically placed. This is half of this one, as said in the question. So path difference दोनों के बीच का क्या होने वाला है? Lambda by 4. Lambda by 4 कहने का मतलब कितना हुआ तुम्हारा? That is your part difference is lambda by 4. Lambda is equivalent to 2 pi radian. So 2 pi by 4. So this is equal to how much? This is your part difference was this one. Phase difference is your delta phi is your pi by 2. And if delta phi is pi by 2, then this will become how much? Pi by 4. क्योंकि delta phi by 2 लिख रहे हो आप यहाँ पे. So this is pi by 4 and this will become 4 I naught. Cos pi by 4 is 1 by root 2 and a square of that 1 by 2. So this is 2 I naught. So intensity is 4 I naught, 2 I naught, 0. Ratio क्या होगा तुम्हारा? 2:1:0. So third one. Okay. Correct option should be which one? It should be third one. Okay. I hope it is clear. Now let us look at this question. So question क्या कह रहा है? Two coherent sources of sound S1 and S2 produce sound waves of same wavelength. Okay. And they're in phase. Okay. So source आपस में phase में है. There is no part difference getting introduced because of the wave these sources exist. Okay. So they are in phase. S1 and S2 are separated by a distance of 1.5 meter. A listener located at point L. Okay. So here is the listener. Done है. Directly in front of S2 finds that intensity is at a minimum value when he is 2 meter away from S2. So अगर ये इस पोजीशन में तुम्हारा लिसनर है यहाँ पे, then he is or she is observing minimum intensity. Means यहाँ पे destructive interference हो रहा है. डन है. सो कहने का मतलब ये है, S2 से जो लाइट आ रही है L तक, that will travel 2 meter, and जो S1 से आ रही है, that will travel how much length? This much. And this length will be equal to how much? This is 2 meter, this is 1.5. So 2 का square 4, 1.5 का square 2.25 का root under. So this is 6.25, that is your 2.5 meter. Done it? So part difference between these two is going to be how much? 2.5 minus 2 meters. So delta x is equal to 2.5 minus 2, and that is 0.5. Okay, and that must be equal to how much? Integral multiple of lambda by 2. Lambda by 2 या 3 lambda by 2 या फिर 5 lambda by 2, sort of that thing. So you can say 2n plus 1 lambda by 2. Okay, so this is this thing. If the listener moves away from S1, keeping his distance from S2 fixed, the adjacent maximum of intensity is observed when the listener is at a distance d from S1. So when it is at a distance d somewhere here, the listener observes adjacent maximum. कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा ये पहला मिनिमा है, let's say, if this is पहला मिनिमा, then here you will be getting first maxima. क्योंकि आप इंटरफेरेंस पैटर्न याद करो, सबसे पहले क्या होता है, हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके बाद पहला मिनिमा आता है, देन वी डिफाइन कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या होगा, उसके बाद समवेयर वी गेट फर्स्ट मैक्सिमा एट एन एंगल ऑफ लैम्डा बाई ए. ऐसे भी आप एंगल से चेक कर लो. फर्स्ट मिनिमा एट द एंगल ऑफ लैम्डा बाई 2 एंड फर्स्ट मैक्सिमा कितने एंगल पे होना है? लैम्डा बाई ए. सो डेफिनेटली इसके बाद होगा.
Done. So if this is first minima, then this will be first maxima. So we need to check ये कौन सा minima है, ठीक है? So wavelength तुम्हारा क्या है 1 meter and this is 0.5. So 0.5 is nothing but lambda by 2, right? 1 by 2. Done है. So यहाँ पे इनका वैल्यू तुम्हारा क्या है 0 है basically and this is lambda by 2. So this is first minima and so this has to be first maxima. और first maxima के लिए तुम्हारा पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए लैम्डा के बराबर. So you need to check, I mean, value of d हमें निकालना है. So d minus 2. What you will be saying here, this is your d and this is 2. So d minus 2 should be equal to how much? Lambda. So d should be equal to how much? 2 plus lambda. So this is 2 plus 1. That is your 3 meter. So d should be 3 meter, right? Option, correct option should be fourth one. Let us check. Yeah, it is fourth one. So simply you needed to identify. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. Adjacent maximum की बात करिए. That simply says कि you identify this listener is receiving which minimum here at this point. I mean first, second, third, fourth, sort of. उसका adjacent maximum the person is listening at this point. ठीक है. सो वहां से आप ये वाला n का वैल्यू आप निकाल पाओगे कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेना है तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या लेना है. ठीक. That was important in this question. Now let's move ahead. A beam of plane polarized light with a large cross-sectional area and uniform intensity falls normally on a polarizer of cross-sectional area this way. So this is the polarizer. इसका cross sectional area क्या दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 4, which rotates about its axis with an angular speed of this one. And this is rotating. I mean ये जो polaroid है जैसे इसको हम ऐसे indicate करते हैं, done है? And this is rotating. It means it is not maintaining its path axis is not maintaining constant angle with certain direction. That angle will keep on changing because this is rotating. Okay. What is the energy of light passing through the polarizer per revolution? सो इस पोलराइजर से जो लाइट पास कर रही है उसका एनर्जी कितना होगा इन जूल यू आर गेटिंग आस्क्ड, नॉट इंटेंसिटी यू आर गेटिंग आस्क्ड. इंटेंसिटी का क्या होता है वैल्यू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो उसका यूनिट क्या होगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, बट यहाँ पे देखो सिंपली जूल पूछ रहा है हमसे यानी कि एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है. We have to be careful with this one. Also, we are taking here plane polarized light incident. Done it? So we can use Malus's law. Now, if we use Malus's law, I naught cos square theta. But theta is not fixed, right? It is changing. Or if theta is changing constantly, then you need to take the average of this thing. Done it? जैसा हम unpolarized light के साथ करते हैं. Because there what happens, there actually theta is changing because electric field vectors are not properly oriented. यहाँ पे electric field vector is properly oriented because this is plane polarized light, but here theta is changing because this polaroid itself is moving. So case कुछ same है, only situation has changed. Okay, so same thing you will be getting I naught by 2. ठीक है, this is the intensity you are getting. Now how you will reach to the energy thing. So आपको भी पता है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इसका एरिया क्या है 3 into 10 to the power minus 4. So what is the value of energy per second that it will receive this polaroid. Okay, so that energy getting received per second will be equal to intensity into area. अगर आप I into A करते हो आपको क्या मिलेगा E by T, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड. सो दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी क्या है तुम्हारा 3.3 इंटू एरिया. This is 3 into 10 to the power minus 4. But we have to calculate energy itself. So in one revolution we are getting asked. So one revolution का मतलब कितना टाइम. So टाइम पीरियड के बराबर. टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा 2 पाई बाई ओमेगा. ठीक है. Omega is given 31.4. So 2 into 3.14 divided by 31.4. So this and here 110. So this is basically equal to 1 by 5. T is 1 by 5. Okay. So energy will be equal to how much? I mean you just per second इतना है तुम्हारा. तो if you do this for t seconds, I mean 1 by 5, then this will become 3.3 into 3 into 10 to the power minus 4 into 1 by 5. So this is what you're going to get. If you multiply this is 9.9 by 5 into 10 to the power minus 4. So this is almost 10 by 5. So that will give you how much? That is your 2.
2 into 10 to the power minus 4, but nothing of this sort is there. अच्छा, I नॉट बाई 2 हमने नहीं किया, ठीक है। इंटेंसिटी हमने निकाला, I नॉट को ही यहाँ पे लिखा है, देखो I नॉट into this, so this into half you need to do, right? So this into half and this into half. So this will become 5 into 2, 10, and this will almost get cancelled. So 10 to the power minus 4. Correct option should be second one. So yeah, let us check with the option. Yeah, it is second one. Let's move ahead. Two light wave having same wavelength lambda in vacuum are initially in phase. So they are in phase. The first wave travels a path of length L1 through a medium of refractive index N1. So first light तुम्हारा कितना distance travel किया? Optical distance we take. So that is N1 L1. Optical distance क्या होता है? Refractive index of media into geometrical length. So this is this one. While the second wave travel a path length of L2 through a medium of refractive index this. So second light, ओके, L1 L2 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी टेकन है, तो एक काम करती हूँ, फर्स्ट लाइट के लिए ऐसे यूज करती हूँ। सेकेंड लाइट तुम्हारा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? दिस विल कवर N2 L2. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स? सो पाथ डिफरेंस आप निकाल लो। पाथ डिफरेंस क्या होगा? N1 L1 माइनस N2 L2। और इसका फेज डिफरेंस में आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सो N1 L1 माइनस N2 L2 into how much? 2 pi by lambda. This is what you are going to do. Then क्योंकि हमें पता है जैसे देखो, अगर लेंथ लैम्डा है तो एंगल 2 पाई रेडियन है, लेंथ यूनिट है तो 2 पाई बाई लैम्डा, एंड इफ लेंथ इज दिस वन देन दिस इनटू दिस, यूनिटरी मेथड, ओके। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन सिम्स लाइक थर्ड वन। इससे इजी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है ना, कितना इजी था, आप भी देख सकते हो। Now let us move ahead. In Young's double slit experiment, light of wavelength this is used to produce an interference pattern. Distance between slit is given. What is approximate angular width of fringes on the distant screen? ठीक है, ऑप्शन देखो, एंगल काफी छोटे हैं, सो वी कैन यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बट यू हैव टू बी केयरफुल। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि तुम्हें डिग्री में एंगल बताना है, ठीक है। एंड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेकर जो भी थीटा आता है वो हमें रेडियन में आता है। सो लेट अस बी केयरफुल। व्हाट इज गेटिंग आस्क्ड? एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंजेज ऑन द डिस्टेंट स्क्रीन। सो फ्रिंजेज के बीच का एंगुलर विथ क्या होगा? सो फर्स्ट तुम्हें फ्रिंजेस का विथ पूछ रहा है ना, एंगुलर विथ ऑफ द फ्रिंजेज। सो फ्रिंज का एंगुलर विथ क्या होगा, कैसे आप निकालोगे? जैसे देख लो, हमारा पहला मिनिमा सपोज कर लो यहाँ मिला, दूसरा मिनिमा यहाँ मिला, यहाँ, ठीक है। सो इनके बीच में क्या होगा? लाइट। फर्स्ट मैक्सिमा इनके बीच में होगा एंड देयर विल बी लाइट थ्रू आउट, ओके। सो इसका विथ कितना है? I mean, this width is basically the width of fringe, okay? Because this is cornered by, I mean, this is bordered by two minimas. So in between is the light, and this is fringe width, okay? So ये angle तुम्हारा कितना है? Suppose कर लो ये मैंने पहला minima लिया है, so lambda by 2a. ये मैंने तुम्हारा दूसरा minima लिया है, so this is 3 lambda by 2a. What is this angle difference? 2 lambda by 2a, lambda by a. Simple, ठीक है? So this is lambda by a. ऐसे भी आपको पता है फ्रिंज विड्थ क्या होता है? लैम्डा बाई ए इंटू डी ही तो होता है। लैम्डा बाई डी लिख लो, स्मॉल डी लिखना ज्यादा सही होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वाईडीएसी सेटअप, ठीक है। सो यही तो लिखते हैं, यानी कि एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंज क्या होता है? लैम्डा बाई डी इंटू डी बिकम्स लीनियर विथ, ओके। सो दिस इज दिस थिंग, यानी कि आपको निकालना है लैम्डा बाई डी। सिंपल। सो लैम्डा का वैल्यू तुम्हारा क्या है? 500 नैनोमीटर, 10 टू द पावर माइनस 9, ओके। And this is small d is 5 into 10 to the power minus 5, okay। and this is in radian। radian को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। जैसे देखो 2 पाई रेडियन क्या होता है तुम्हारा? 360 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच? 360 by 2 पाई, and this much radian will be equal to how much? into 360 by 2 पाई। this is what you have to do in order to reach to the answer, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको कट कर लो, 10 टू द पावर माइनस 4, देन 2 जीरो एंड एक जीरो और है, सो यू विल बी लेफ्ट विथ ये कट कर लो। सो आई मीन दिस इज -4 एंड देन 3, 10 टू द पावर -1, ओके। सो 10 to the power -1 into 36 divided by 6.28। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6.28। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? आई मीन लेकिन यहाँ पे आंसर्स क्लोज हैं क्या? नहीं है। सो वी कैन अप्रोक्सीमेट, सो नियर अबाउट दिस विल बी नियर अबाउट 6, ठीक है। 6 से थोड़ा कम होगा, सो 5 आई मीन 5.7 के करीब हम कह सकते हैं। सो दिस इज 0.57 डिग्री,
Okay, so correct answer seems like it is third one. So yeah, it is third one. Okay, now let us move ahead. So yeah, in Young's double slit experiment, 16 fringes are observed in a certain segment of a screen when light of wavelength 700 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, how many fringes will be observed in the same segment of a screen? So देखो ध्यान से देखो, हमें 16 fringes मिल रहे हैं certain segment में. Let's say in this segment. So if in this segment, let's not let it touch the central point. Suppose कर लो मैं इसकी बात कर रही हूँ. इतने लेंथ में हमें कितने फ्रिंजेस मिल रहे हैं? 16 फ्रिंजेस. सो 16 फ्रिंजेस कहने का मतलब इसका विथ क्या होना चाहिए? एक फ्रिंज के लिए विथ तुम्हारा कितना होता है? लैम्डा बाई ए. 16 के लिए कितना होना चाहिए? 16 into lambda by a. Sorry, d. This if we are talking about YDAC setup. So this is this one. And for this wavelength getting used is how much? 700 nanometer. And it is said that अगर तुम्हारा wavelength 400 करते हो तो कितने fringes मिलेंगे? Again, why we are not changing? Wavelength we are changing. So this is the why. And for this why, I mean, how many fringes of 400 nanometer we will be obtaining? So let's say n number of fringes we are getting. So n into this is your 400 divided by how much is this one? This is your d. Okay, so this is this will be equal to y. Okay, let us equate these two things. You will be getting the answer. So क्या मिलने वाला है आपको? आप देख लो यहाँ पे 16 lambda by d is equal to n into आपका आंसर आ चुका होगा. This is 16 lambda का वैल्यू क्या था तुम्हारा? 700. So 700 आप पुट कर लो. 16 into 700 by d, n into 400 by d. So d will get cancelled. Two zeros will get cancelled and n is equal to, I mean 4 से ये 4 cancel होगा. So n is equal to 7 into 4. So n is equal to 28. Correct answer will be which one? It should be first one. So answer क्या है तुम्हारा? First one. Okay. Let's move ahead. Interference fringes are observed on a screen by illuminating two thin slits 1 millimeter apart with a light of wavelength this one. Okay, the distance between slits and the screen is this. A bright fringe is observed at a distance this one from the central bright fringe. What is the path difference between the waves reaching this point from the slit? So क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाने की कोशिश करो. I mean wavelength का value given है, slit separation given है, screen का distance given है, that is small d, capital D, wavelength, everything is given. And bright fringe is observed at a distance this from the central bright fringe. So let us draw the diagram. यहाँ से कितने distance पे आपको मिला है? This is at a distance of 1.27 millimeter. Okay. What is the path difference between waves reaching? So देखो path difference का मैंने दो फॉर्मूला तुम्हें दिया था, एक तो d sin theta, दूसरा d y by d. Okay, so this is the path difference. Okay, and this path difference will be equal to how much? This will be equal to n lambda because we are getting what? We are getting here bright thing. Okay, so this is somewhat equal to n lambda. And what we have to actually talk about, path difference ही हमें निकालना है. ठीक है? So yeah, we simply need to put the value. This one also we don't require to do. So this is the path difference. है ना? So this is this thing. Now you simply need to put the things. Small d का value तुम्हारा क्या है? 1 millimeter. So 10 to the power minus 3. And what is this? Y? Y is your 1.27. Again millimeter. So 10 to the power how much? Minus 3. And what is this capital D? Capital D is your 100 centimeter. That is 1 meter. Okay. So this is equal to how much? 1.27 into 10 to the power minus 6. That is 1.27 micrometer. So this is going to be your answer. Okay, sorted. Chalo. Now let us look at this question. A polarizer analyzer set is adjusted so that intensity of light coming out of analyzer is 10% of the original intensity. Okay. So polarizer analyzer set क्या होता है? एक polaroid है, दूसरा भी polaroid है. Another second one is called analyzer because इसको हम rotate करते हैं in order to check for कौन से angle पे इससे जो light आ रहा है further उसकी intensity इसको rotate करने से कैसे change हो रहा है. Then so this is basically this set and intensity of light coming out of analyzer is 10% of original. So let's say on this Polaroid, light that is falling has an intensity of I naught, and then whatever is coming out has a intensity of how much? 10% of this. So I mean this will become 10 by 100 into I naught, that is I naught by 10. So this is this thing. Now it is said that this Polaroid
is not absorbing any light. So whatever is happening because of this polarization thing, pass axis thing. ठीक है, so कोई भी absorption नहीं हो रहा है. And then what else, by what angle should the analyzer be rotated further to reduce the output intensity to zero? सो आउटपुट इंटेंसिटी को जीरो करना है. अब देखो इनिशियली ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से जो भी लाइट आया दैट इज पासिंग थ्रू इट एंड सर्टेन इंटेंसिटी यू आर गेटिंग. अगर आपको जीरो इंटेंसिटी लेना है तो सेकंड को आप रोटेट करके कुछ ऐसे पहुंचाओगे सच दैट दिस एंगल इज 90. If this angle is 90, then whatever intensity of light is passing through first one, that I have called as I naught. So this I naught, which is polarized because it has already passed through one polaroid. So this must be polarized, right? You can use Malus's law. I naught cos square theta will be the value of intensity of light passing through second one. And if this has to be zero, what you will be saying, theta will be 90 degree. Then only this will be what? Zero. ओके, सो आपको 90 करना है, इसका मतलब आप कितने एंगल से रोटेट करोगे. फॉर दैट यू फर्स्ट नीड टू नो दिस एंगल, राइट? एंड देन यू विल बी सेइंग दैट दिस एंगल is 90 minus theta. How you can calculate theta? So ये लाइट जो आया I नॉट है, इससे जो पास कर रहा है I नॉट by 10 है. So you will say that I नॉट cos square theta is equal to I नॉट by 10. So cos square theta is equal to how much? 1 by 10. So cos theta, अब देखो अप्रोक्सीमेट हमें करना पड़ेगा. जैसे cos थीटा तुम्हारा क्या दिख रहा है, इज इक्वल टू 1 बाई रूट 10, और रूट 10 3.3 समथिंग होगा. ठीक है, सो अगर मैं इसको 3 लेकर चलूं तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.33. डन है. और अगर तुम्हारा थीटा 60 होता है तो वैल्यू हमें कितना मिलता है? 0.5. सो ये वैल्यू तुम्हारा 0.5 से छोटा है. अगर वैल्यू 0.5 से छोटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? ग्रेटर. क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है? एंगल ग्रेटर वैल्यू कम. ठीक है, सो अगर तुम्हारा 60 पे 0.5 है और स्मॉलर वैल्यू की हम बात करें तो एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? छोटा. सो दैट एंगल इज ग्रेटर देन दिस, थीटा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री. एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, 90 माइनस थीटा विल बी ग्रेटर देन 30 डिग्री. क्योंकि थीटा अगर आप 60 रखते हो ना तो ये 30 आएगा. डन है. सो इट हैज टू बी सॉरी स्मॉलर देन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 60 है ना. सो ग्रेटर 60 होगा तो डिफरेंस तुम्हारा स्मॉलर देन 30 होगा. सो स्मॉलर देन 30 कहने का मतलब तुम्हारा क्या है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 18.4. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज विच वन? इट इज योर फर्स्ट वन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ओके, सॉरी. Now let us look at this question. Question क्या कह रहा है? A system of three polarizer P1, P2, P3 is arranged such that axis of P3 is perpendicular to the pass axis of P1. So यहाँ पे आप P1 बना लो and this is your P3. They are perpendicular. Okay. The pass axis of P2 makes an angle of 60 degree with the pass axis of P3. So this angle is your how much? This is your 60 degree. अगर ये 60 है तो ये तुम्हारा क्या होने वाला है? This is your 30 degree. ठीक है, सो दिस इज दिस थिंग. अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1. सो यहाँ पे आई नॉट तुम्हारा इंसिडेंट है विच इज अनपोलराइज्ड लाइट, राइट? सो यहाँ से जो लाइट जाएगा इट विल हैव इंटेंसिटी ऑफ आई नॉट बाई 2. After passing through all these three polarizers, the transmitted intensity is I. What is the value of ratio I naught by I? So I का value आप निकाल लो. यहाँ से जब ये पास करेगा तो कितना होगा? I naught by 2 cos square 30. So that is equal to I naught by 2 into root 3 by 2 का square, that is 3 by 4. So this is the incident light on P3. So from here it will be I naught into 3 divided by 8 into cos square 60. So that will become 1 by 4. So this is equal to how much? 3 I naught by 32. Okay, so this is this. Now what is the ratio? I naught by this. So I naught divided by 3 I naught into 32. So this is going to be equal to 10.67. So correct option will be which one? It should be first one. Okay, so correct option is your first one. Now let us move ahead. In a double slit experiment, a thin film of thickness T and refractive index mu is introduced in front of one of the slit. As a result, central maximum shifts by 1 fringe width. So मैंने तुम्हें बताया कि shifting कितना होगा? T mu minus 1, and this will be equal to n lambda. This is the delta x. This is the shifting in path length, and for n number of fringe to get shifted, this will be equal to n lambda. And here shift by 1 fringe width. So n का value 1 हो जाएगा. This is your lambda.
So the value of t तुम्हारा क्या है? Lambda by mu minus 1. So simply put the formula, get the answer. So lambda by mu minus 1. Fourth one will be your correct one. So this is your correct. Now let us move ahead. The figure shows a Young's double slit experimental setup when a thin transparent sheet of thickness T and refractive index mu is introduced in front of one of the slits. The central maximum shifts by a distance equal to n fringe width. If the value of light used is lambda, value of T is. Again कुछ नहीं करना. T mu minus 1 is equal to n lambda. So T का value है n lambda by mu minus 1. So first one. Done. Simply putting the formula, getting the answer type question. Now let us look at this question. Consider a Young's double slit experiment as shown in figure. What should be the slit separation D in terms of wavelength such that first minima occurs directly in front of slit S1. So first minima तुम्हें directly यहाँ पे मिल रहा है और question ये पूछा जा रहा है what should be the value of D in terms of lambda for this to happen. Okay. So at this point, what will be the part difference? So I mean, first minima is happening here. Part difference would be lambda by 2. Okay. And geometrically, if we see here, how much is it? So this is your 2D, right? And since capital D is comparable with the value of D, we will calculate it simply here rather than simply using the formula. So this will become how much? D square plus 2D ka square. So that will give you 5D square. So this is root 5D. Okay. And what is going to be the part difference? So part difference will be equal to, this is your root 5D minus 2D, and this has to be equal to lambda by 2. So D is equal to how much? D is equal to lambda by 2, and this is root 5 minus 2. So correct option should be which one? It should be second one. Yeah, it is second one. Now let us focus on this question. In Young's double slit experiment with slit separation 0.1 millimeter, a bright fringe is observed at an angle this using light of wavelength lambda 1. Okay, so this is the arrangement, and at certain angle we are observing bright fringe when we are using light of wavelength lambda 1. So let's say this is nth bright fringe. When light of wavelength lambda 2 is used, a bright fringe is again seen at the same angle in the same setup. Given that lambda 1 and lambda 2 are in the visible range, their values are. So lambda 1 and lambda 2 ka values approximate karna hai. So let's say for wavelength lambda 1, this is n1th maximum, n1th maxima, and for second wavelength, this is n2th maxima. Okay. So for first wavelength, if you say what will be the part difference over here? So part difference will be nothing but d theta. Theta is very small, 1 by 40. So d theta I'm going to write, and d is how much? Your 0.1. So 10 to the power minus 4 into theta, that is 1 by 40, and this is going to be equal to how much? N1 lambda 1. So n1 lambda 1 will be equal to how much? If you check here, 10 to the power minus 5 by 4. So this will become 25 into 10 to the power minus 7. अगर नैनोमीटर के रेंज में आपको लिखना है, आप लिखोगे 2500 into 10 to the power minus 9. So this is this. Now, if you have, I mean, here n1 is integer. Okay, so this is integer. We need to keep in mind. And similarly, n2 lambda 2 will be equal to how much? 2500 into 10 to the power minus 9, because in the same setup we are getting here maximas for both the wavelengths. So part difference at this point is fixed because this angle is fixed 1 by 40. So part difference is d theta. That is same for both cases, right? So both cases में change क्या होगा? Order of maxima will change. यहाँ पे n1 maxima है and here n2th maxima है. Okay, so this is this thing. अब देखो आपको lambda 1 और lambda 2 को approximate करना है. I mean यहाँ पे check करना है visible range में वो कौन सा value होगा. So lambda 1 को मैं क्या बोलूँगी? 2500 into 10 to the power minus 9 divided by n1. Similarly lambda 2 को divided by n2 करोगे. ठीक है. So या फिर एक काम करो, opposite लेकर चलते हैं. n1 को आप क्या लिखोगे? n1 को आप लिखोगे दिस डिवाइडेड बाई लैम्डा 1. सो हमें लैम्डा 1 वही पिक करना है जो तुम्हें 2500 को एग्जैक्टली कट कर सके. अगर एग्जैक्टली कट नहीं करेगा तो तुम्हारा इंटीजर नहीं आएगा. ठीक है. सो आप चेक कर लो यहाँ पे कौन कट करेगा. 380 तो कट नहीं कर सकता, दैट इज क्वाइट क्लियर. सो ये दोनों तो तुम्हारा कैंसिल हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट 400. 4 कट कर रहा है क्या? सो दिस विल बिकम, या 4 कट कर सकता है. कर सकता है क्या? लेट अस चेक. सो 2500 बाई 400
नैनोमीटर है ना, तो 10⁻⁻⁹ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, 400 में चले जाओ। नहीं, 25/4 कैसे कट होगा, ये तो नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओनली पॉसिबल थिंग इज 625। आप चेक कर लो, 2500 डिवाइडेड बाई हाउ मच, दिस इज योर 625। सो दिस विल गेट कैंसिल। जैसे देखो, ये 25 से 25 टाइम्स ऐसे कट होगा, एंड देन दिस विल बिकम 4। ओके, सो एक्चुअली 4 यू आर गेटिंग। दिस इज नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ भी कट हो जाएगा। सो या 625 इज वन ऑप्शन। सेकंड 500 भी फुलफिल करेगा, क्योंकि 2500/500 करोगे, यू विल बी गेटिंग इंटीजर। सो सेकंड वेवलेंथ विल बी 500 नैनोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी सेकंड वन. Okay, so this is correct one. You just needed to deal with the mathematics. Now let's move ahead. In Young's double slit experiment, slits are separated by 0.320. Okay, light of wavelength 500 nanometer is incident on the slate. Total number of bright fringes observed in angular range, this one. So इस range में तुम्हें कितना क्या मिलेगा? How many bright fringes you are going to observe? So let us talk about this one. Part difference तुम्हारा क्या होता है? Part difference होता है तुम्हारा d sin theta. Okay, and let's say at theta is equal to 30 degree, which order of maxima we are getting? So let's say nth maxima we are getting, so n lambda. d का वैल्यू तुम्हें कितना दिया हुआ है? 0.320. so 32 into 10 to the power minus 5, and sine theta, that is sine 30, that will become half, and this is n wavelength given hai, right? So that is 500 into 10 to the power minus 9. Okay, so this is this thing. Now you need to solve for this one. This is your 16. Okay, and this will be how much? I mean, let us look for this one. I mean, 10 to the power minus 5 hai. This will become 10 to the power minus 4. And then again there is 2. So this will become 10 to the power minus 2. And 5 into 10 to the power minus 2. So n is equal to 1600 divided by how much? 5. So this will give you how much? 3200, I guess. No, 320. Okay. So this is your 320. This is 320th maxima. डन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। -30 में भी इस इधर तुम्हें यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे अगेन यू विल बी गेटिंग 320th maxima this side and also this side. So how many maximas are there? So from here to here 320, from here to here 320, and this is one central maxima. So 620 plus 1, that is, sorry, this is 320, this is 320, 640. 640 plus 1, that is 641. So correct option should be which one? It should be second one. Okay, let us now move ahead. What is said in here? Consider a tank made of glass with a thick bottom. Okay, it is filled with a liquid of refractive index mu. So it is filled with a liquid of refractive index mu. A student finds that irrespective of the incident angle I, for a beam of light entering the liquid, the light reflected from the liquid glass interface is never completely polarized. सो रिफ्लेक्टेड लाइट कभी पोलराइज नहीं हो पा रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ब्रूस्टर्स एंगल तक पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, फॉर दिस टू हैपन द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज व्हाट? सो फॉर दिस टू हैपन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू? सो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज योर आर। ओके, अगर ये ब्रूस्टर्स एंगल तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम ब्रूस्टर्स एंगल को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं? जैसे ऐसा कुछ हुआ, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन at first interface, and then this is falling onto this one. So this angle of incidence here is r, and this light here is getting reflected, but it is getting reflected in such a way that polarization is not possible, is not getting possible. इसका मतलब ये r जो है वो ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर हो नहीं पा रहा कभी भी, for certain value of mu here. Okay, so it is getting asked what is the minimum value of mu. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप देखो, जैसे I को, सबसे पहले I को R से रिलेट करने की कोशिश करो। अगर मैं करूँ तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी एयर में इंसिडेंट है, राइट? सो 1 into sin I is equal to how much? Is equal to mu sin R. Okay, so this is this thing. We are interested in sin R. R में interested है because that is going to give us Brewster's thing. So sin R is equal to how much? Sin I by mu. अब देखो mu तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिक्स है। I को हम चेंज कर सकते हैं in order to get polarized light here in the reflected portion. Okay, so I को चेंज करके, जैसे देखो अगर हमारा यहाँ पे ब्रूस्टर्स एंगल नहीं पहुंच पा रहा है,
सपोज कर लो फॉर सर्टेन केसेस, देन व्हाट वी कैन डू, अगर ये कम है ब्रूस्टर्स एंगल से, देन वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ आई। अगर ये आर कम है, आई को हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आई को हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं, उसका भी एक लिमिट होगा ना। आई को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 90 डिग्री, यानी कि लाइट को ऐसे इंसिडेंट कर सकते हैं, एंड फॉर दैट केस वी विल बी गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर जो आपको मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा साइन 90/μ। and this here r that we are getting is actually not enough, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि I mean for beam of light entering the liquid, the light reflected from liquid glass interface is never completely polarized. So ये never ऐसा हो पा रहा है, इसका मतलब जो मैक्सिमम r मिल रहा है ना, वो तुम्हारा ब्रूस्टर्स एंगल से छोटा हो रहा है, ठीक है। सो इसके बियॉन्ड तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे साइन का मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ले सकते। सो मैक्सिमम साइन आर का वैल्यू 1/μ है, यानी कि 1/μ इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट, आई मीन साइन आर हियर इक्वल टू 1/μ सच दैट आर इज लेस देन ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। सो फॉर दैट केस you have to talk about minimum value of mu. So what you will say here, you will say that this r that you are getting is less than what, Brewster's angle. So this is your Brewster's angle को मैं IB से डिनोट करती हूँ। अब देखो Brewster's angle को आप क्या लिखते हो, आपको याद होगा that is written as tan IB, and tan IB is equal to how much? Light is going from which media to which media? This is going to mu to mu g, sort of, right? So this will become mu g, that is एक्चुअली मैं अक्सर फॉर्मूला बोलती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ ही यूज करके जल्दी से चेक करूंगी। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज mu into sin this IB will be equal to 1.5, yeah, so that will be equal to IB will be equal to how much, 1.5/μ, tan IB is 1.5/μ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कौन से मीडिया को कैसे लिखते हैं। सो दिस इज दिस थिंग, ओके। सो tan IB इज दिस वन। अब देखो यहाँ पे आपके पास साइन आर का रिलेशन है, साइन आर इज 1/μ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस आर, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं tan लूंगी तो मुझे tan का वैल्यू पता होना चाहिए। सो कॉस आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/μ का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर डिवाइडेड बाई म्यू। सो व्हाट इज गोइंग टू बी tan r sin r by cos r, so 1/μ divided by this, so you will be getting mu square minus 1, okay. So let's take tan both sides, so tan r is less than tan IB, that is what we can write. So tan r is equal to how much, root under mu square minus 1, and this is less than how much, 1.5/μ ka value, okay. Let us do the squaring on the both sides, so mu square minus 1 is less than equal to how much, 2.25/μ square, okay. सो यहाँ से म्यू स्क्वायर माइनस, ओके, दिस इज tan r एंड दिस इज tan IB, ओके। सो यहाँ पे मुझे आई मीन okay, that we are getting in the power of 4 I will be getting in that in this case then, ठीक है। Let us rethink the calculation. ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पे tan r का वैल्यू गलत लिख दिया यार, ऑपोजिट लिख दिया है ना। tan r तुम्हारा 1/this होगा ना, बिकॉज यू सी हियर केयरफुली, आई मीन साइन r बाई कॉस r करोगे यू विल बी गेटिंग 1/μ स्क्वायर माइनस 1। सो इसलिए आंसर काफी अजीब आ रहा था क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है, अब म्यू का पावर 4 दिख रहा था, सो आई थॉट लाइक समथिंग इज मिस्टेक। सो म्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, म्यू स्क्वायर इज लेस देन हाउ मच, 2.25 म्यू का स्क्वायर माइनस 2.25, ठीक है। सो इसको इधर लेकर जाऊंगी तो आई मीन इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, सो 2.25 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन हाउ मच, दिस इज ग्रेटर देन 2.25, okay. So this is this, and this 1.25 हो जाएगा, so mu square is greater than 2.25 divided by 1.25, ठीक है। So yeah, we have dealt with it correctly, yeah, this is so. So now this will get cancelled, and if you solve with this one, this will become this, and this is your this, and this is your this, and this is your 9, okay. So this is your 9/5, यानी कि mu square, mu is greater than how much, root 9/5. So mu has to be greater than root 9/5, so minimum value that we can manage is root 9/5. So root 9/5 कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, 3/√5. So correct option should be second one.
ओके। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए क्योंकि तुम्हें सोचना पड़ेगा ये इनइक्वालिटी में कैसे लेकर जाए। एंड सो फॉर दैट यू नीड टू थिंक कि अगर ये पोलराइज नहीं हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट, तो एंगल क्या हो रहा है। एंगल ब्रूस्टर्स एंगल तक पहुंच नहीं पा रहा, और पहुंच नहीं पा रहा है इसका क्या मतलब है, आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, वो मैक्सिमम तक आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा ये कि जो मैक्सिमम मिल रहा है that is less than your IB, then only this is not getting ever possible. R max is less than IB. Okay, so that is what we have done here. Now let us move ahead. This thing you will be doing yourself. ये क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल पोलराइजर का है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, so I will be leaving it on to you now. Okay, let us deal with this one. Angular width of central maximum in a single slit diffraction pattern is 60 degree. The width of slit is 1 micrometer, and this is illuminated by monochromatic plane waves. A second slit of same width is placed nearby so that young fringes can be observed on a screen located 50 centimeter away. If the observed fringe width is 1 centimeter, what is the separation between center of two slits? So सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि डिफ्रैक्शन का सेटअप है, और डिफ्रैक्शन के सेटअप में जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है उसका विथ हमें कितना मिला है, दैट इज योर 60 डिग्री। ठीक है, सो 60 डिग्री कहने का मतलब ये 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री पे पहला मिनिमा मिला है। और मिनिमा का कंडीशन तुम्हारा क्या होता है, आई मीन ए साइन थीटा, सो ए साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा। डन है। सो ए का वैल्यू, दिस इज ए साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा, सो ए बाई 2 इज योर वर्ड लैम्डा। सो वेवलेंथ हमें समझ में आ रहा है, वेवलेंथ क्या है ए के टर्म में। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। Now A value is given, that is 1 micrometer, so that we will be putting later on. A second slit of the same width is placed nearby, so that I mean we are converting it into YDAC setup. So two slits हमने ले लिया ऐसा same जो यहाँ पे use हुआ है, ऐसा कुछ लिया, and then we are keeping one screen. And screen located how much, 50 centimeter away. So half meter पे हमने एक screen को रखा. If the observed fringe width is 1 centimeter, what is the separation between centers of two slits? So इन दोनों slits के बीच का separation क्या है, अगर तुम्हारा fringe width is 1 centimeter. So fringe width क्या होता है तुम्हारा, lambda d by d. This is your equal to how much? This is your 1 centimeter. So 1 into, और भी कुछ सेंटीमीटर में है क्या, so that I won't be changing it. Yeah. So 1 सेंटीमीटर है, d भी सेंटीमीटर में, we will cut it. Okay. Lambda का वैल्यू देखो क्या है, a by 2. A is how much, 1 micrometer. So 10 to the power minus 6 by 2. And d is how much, capital D. That is 50 centimeters. So 50. And this is small d, we don't know. And this is your 1. Okay, so this will become small d is equal to how much, 2 से ये 25 कर लो आप, so d is equal to 25 micrometer. That is going to be your answer. So fourth one. ठीक है, so yeah, this is the answer. Now let us look at this question. Question क्या कह रहा है, a plane polarized beam is incident on a polarizer. So diagram आपको given है. The path axis of polarizer makes an angle phi with the x-axis. So this theta, it is looking like theta, it is phi basically, and this is the path axis, and this is making an angle of phi with the x-axis. Okay, as shown in the figure, it is found that for four different value of phi, that is 8 degree, all are in degree, 38 degree, 188, 218, the transmitted intensities are same. What is the angle between actual direction of polarization of incident light and the x-axis? So let's say incident light का जो electric field vector है वो कुछ इधर है, so it is making an angle of, let's say, alpha with the x-axis. Done it? We are getting asked what is the angle between actual direction of polarization of incident light with the x-axis. So we are getting asked alpha, right? Electric field vector x-axis से कितना angle बना रहा है, and it is given in the question. ये चार वैल्यू ऑफ फाई के लिए इंटेंसिटी सेम है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पोलरॉइड. सो इंटेंसिटी कमिंग आउट विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, and cos square alpha you will say. No, not alpha, the angle that this electric field vector is making with the path axis. So ये कितना एंगल बना रहा है आप देख लो. This is phi, this is alpha, so this angle is how much, alpha minus phi. So this is alpha minus phi. So if intensity coming out for different value of phi is same, it means cos का value of alpha minus phi is same. Done है? Then only intensity will be same. So आप एक काम करो, alpha minus phi को चेक करने की कोशिश करो, alpha का values put करके. So alpha minus phi, this is this thing. So let's take two values of phi. Suppose कर लो मैंने लिया 8 degree and 38 degree. So alpha minus 8 degree and then alpha minus 38 degree. I am going to put the value of alpha.
सो अल्फा अगर फर्स्ट केस में मैं 98 रखूं, सो दिस विल बिकम 90, और उसके लिए तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 128 रखूं, 128 माइनस 38, it will give us how much? This will be your 90। ठीक है, सो ओके, 128 से 28 अगर आप लेकर जाते हो, 120, आई मीन 100, एंड उससे भी 10 को आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो 90। एक्चुअली ये भी सेम ही दिख रहा है हमें, तो चलो और भी फर्दर चेक भी कर लेते हैं। 188 को करते हैं, अल्फा माइनस 188, सो दिस इज योर 98। ओके, मैंने क्या किया, मैंने सही किया ना, अल्फा 98 लिया था ना। ओके, पहले तो फर्स्ट चेक मुझे करना था ना, सो फर्स्ट एंगल के लिए मैंने दोनों को चेक नहीं किया। 90, चलो 98 के लिए हमने चेक किया ना, तो फर्स्ट को चेक किया 90 मिला, सेकंड को चेक करेंगे 98 माइनस 38, आई हैव टू डू, सॉरी। सो 98 माइनस 38 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज आई मीन, देखो अब मेरा दिमाग स्लो काम कर रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 60, राइट? सो ये 60 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी 0, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। सो 98 तो तुम्हारा रॉन्ग हो गया। अब 128 को चेक कर लो। सो 128 माइनस 8 करोगे कितना मिलेगा? 120। एंड 128 माइनस 38 करोगे कितना मिलेगा? 90। अगेन वैल्यूज को मैच नहीं कर रहे, इंटेंसिटी सेम नहीं होगा। Now let's go with the third thing, 203। So 203 minus 8 करो तो तुम्हें कितना मिलेगा? 90, 195, राइट? सो 195 को क्या कह सकते हो आप कह सकते हो 180 प्लस दैट इज गोइंग टू बी 15 डिग्री। ओके, सो दिस इज दिस मच। Now next value, I mean 203 minus 38। So through 203 minus 8 तुमने किया तो 195, एंड 195 से 30 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 165। एंड 165 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 180 माइनस 15 के बराबर ही है ना? डन है। सो आपको भी पता है ये दोनों एंगल के लिए कॉस का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि वन इज पाई प्लस 15, अनदर इज पाई माइनस 15। सो इसके लिए तुम्हारा माइनस कॉस 15 आएगा और इसके लिए तुम्हारा कॉस 15 आएगा, बट स्क्वायर करना है ना हमें, तो मैग्नीट्यूड तो सेम मिल रहा है। सो 203 पे एक्चुअली इंटेंसिटी क्या दिख रहा है हमें? सेम। और भी आप चेक कर सकते हो, जैसे 203 माइनस 188 कर लेना, 218 करोगे, क्योंकि 45 पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 45 माइनस 8, that will give you how much? 5, 40, 37, right? And minus 38, 38 करोगे तो वो I mean 8 something you are getting. So no, it's not getting satisfied. डन है? क्योंकि 90 माइनस सेटिस्फाई हो रहा है क्या? आप चेक कर लो एक बार। 40 माइनस 8 कर रहे हो, कितना आ रहा है? 37। ठीक है, एंड आई मीन नेक्स्ट इज हाउ मच? 38 है, राइट है? सो 45 माइनस 8 किया, ये 45 माइनस 38 कर लो आप, दैट विल गिव यू 7। डन है? अब 7 डिग्री और 37 डिग्री पे वैल्यूज तो सेम नहीं हो सकते, यू कैन सी क्लियरली द डिफरेंस। सो या फोर्थ वन इज नॉट द आंसर, सेकेंड वन इज द ऑप्शन। रेस चेक हमें करने की जरूरत नहीं है थर्ड के लिए। डन है? सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी विच वन? इट शुड बी योर सी। यू जस्ट नीडेड टू लुक एट थिंग्स केयरफुली। Now let us look at this question. So question क्या कह रहा है? Single slit of width B is illuminated by a coherent monochromatic light of wavelength lambda. So हमारे पास single slit है, चलो यहाँ screen लेते हैं। And then if the second and fourth minima in the diffraction pattern at a distance of 1 meter from the slit are at 3 centimeter and 6 centimeter respectively from the central maxima. So चलो central maxima का point ये है, और यहाँ से 3 centimeter पे you are getting second minima, एंड यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे यू आर गेटिंग व्हाट? फोर्थ मिनिमा। ओके, एंड देन वी आर गेटिंग आस्क्ड व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सो सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ क्या होगा? डन है? सो लेट अस समहाउ आई मीन रिलेट दैट थिंग। आई मीन सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ आपको क्या पता है? दैट इज योर लैम्डा बाई ए, that is angular width is 2 lambda by a, and linear width will be 2 lambda by a into d. Okay, so this thing is what we have to calculate. Let us reach to this one from this information given. So देखो second minima हमें कितने angle पे मिलेगा, that we will be getting, I mean second minima के लिए condition क्या होता है? a sin theta is equal to how much? That is equal to your n lambda. So second minima is 2 lambda. Okay, and
इफ यू सी हियर केयरफुली दिस थीटा स्मॉल वी कैन टेक बिकॉज आप देख लो इसका जो विथ है sort of its distance from the central maxima is in the range of centimeter and this d is in range of meter. So अभी भी इसको आप y by d करोगे ना, this angle you will be getting as small 1 by 100 something, okay, 4 by 100, 2 by 100 something, okay. So that is a small angle 0.002. So small angle approximation आप कर सकते हो. So this angle will be equal to how much? 2 lambda by a. And similarly what will be this angle? So this angle will be your 4 lambda by a, okay. So what is the, I mean, angular separation between these two? सो एंगुलर सेपरेशन, या फिर आप ऐसे देख लो 2 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, इट इज एट एन एंगल ऑफ 2 लैम्डा बाई ए एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए इंटू डी. सो सिंपली 2 लैम्डा बाई ए into d is equal to this distance of central max, this distance of second minima from the central maxima. Okay, so ये distance तुम्हारा कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. So this is equal to 3 सेंटीमीटर. और आंसर यहाँ से देखो मुझे इसी से मिल जा रहा है, 2 लैम्डा बाई ए इंटू डी ही तो हमें निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 3 सेंटीमीटर. वी डोंट नीड टू गो फर्दर. ओके, सो यहाँ से आप टिक कर सकते हो. आंसर, करेक्ट आंसर विल बी योर विच वन? इट इज बी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. सो अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, आई विल सी इफ इट इज डिफरेंट आई विल बी सॉल्विंग. In a Young's double slit experiment, slits are separated by 0.5 millimeters. Screen 150 centimeter पे रखा हुआ है and beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maxima to the point where the bright fringes due to both wavelengths coincide. So, I mean, हमारे interference में we are using two wavelengths in order to get what? Interference pattern. So pattern obviously confusing होगा, but in the question हमें उससे डील नहीं करना. हमें ये बताना है कि कौन सा least distance क्या होगा from the common central maxima, क्योंकि central maxima दोनों के wavelength के लिए यही होगा, because at this point for both wavelengths path difference will be 0. So from the common central maxima to the point where the bright fringes due to both coincide. So ये least distance बताना है जहाँ पे दोनों का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगा. तो देखो अगर फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए कोइंसाइड करा, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट के लिए इस पॉइंट पे let's say at this point it is coinciding, so this angle is theta, so part difference is equal to how much? D sin theta. तो फर्स्ट वेवलेंथ के लिए आप कह सकते हो कि n1 फ्रिंज है उसका, so n1 lambda 1, एंड सेकंड के लिए भी आई मीन एट द सेम पॉइंट यू आर गेटिंग, राइट? सो पार्ट डिफरेंस तो सेम होने वाला है, सो d sin theta is equal to n2 lambda 2 and these two are same, right? Path differences because at the same point we are getting. We are talking about bright fringes at the same point because of both wavelengths. So obviously these two has to be equal. So directly मैं यहाँ पे लिख सकती थी n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. Now what you do? You put the values. So n1 lambda 1 का value आप put कर लो, that is your 650. And this is n2, right? So n2 into lambda 2. Lambda 2 तुम्हारा क्या है? That is your 520. Now let us cut it. So 5 से ये 13 times में चला जाएगा और ये 4 से 13 times में चला जाएगा. So what is the value of n1 by n2? So n1 by n2 is equal to 4 by 5. So minimum value of n1 can be 4 and minimum value of n2 can be 5. So this can be your what? 4 and 5. अब आप check कर लो. I mean what should be the distance? So n1 मैंने क्या लिया? 4 लिया. So अगर मैंने n1 4 लिया है, if this is 4, done है. So this is your basically fourth maximum for wavelength. n1 is for which value of wavelength? 650. Okay. So it is fourth maxima for 650. So what will be this distance? इस distance को आप कैसे निकालोगे? आपको पता है fourth maxima will be at angular separation of how much? That will be equal to 4 lambda by d. सो 4 लैम्डा बाई डी इंटू कैपिटल डी. आप किसी भी वेवलेंथ के हेल्प से निकाल सकते हो, दोनों में से किसी को भी. मैंने 650 को चूज किया है. सो 4 इंटू लैम्डा इज 650. 650 के लिए n 4 है एंड अगर आप 520 यूज करोगे तो n को 5 लेना, ठीक है. स्मॉल डी इज हाउ मच? That is 0.5 millimeters. So 5 into 10 to the power minus 4. Okay. So this is this thing. And this into d, that is 150 centimeter. So this is 150 by 100. Okay.
So this will get cancelled, this will get cancelled, and this is your how much? This is your 13, and this is going to be 15 into 4 60, ठीक है, and 60 into 13, that is you're going to be 780, right? So 60, 780 divided by 10 to the power minus 4. So this is going to be equal to how much? आई मीन कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, या वेवलेंथ का यूनिट नहीं लिखा, दैट इज योर नैनोमीटर, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 9। सो यहाँ पे आप 10 टू द पावर माइनस 9 कर लो, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 4, सो 7.8 millimeter. That is what you are going to get as answer. So correct answer will be which one? It should be first one. Let us check. Yeah, it is first one. नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पिन होल कैमरा है जो बॉक्स ऑफ लेंथ एल विद अ होल ऑफ रेडियस ए। सो बॉक्स तुम्हारा कुछ कैसा होगा? आई मीन 3 डायमेंशनली समथिंग होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। सो दिस हैज अ लेंथ ऑफ एल, ओके, सो दिस इज गिवन लाइक दिस। Now with a hole of radius a, so there is a hole, let's say this is, समझ रहे हो ना ये कैसा है? I mean कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे इसको अगर मैं शॉर्ट में बनाऊं तो something this is like this, okay, so this is the box, ओके और ये वैक्यूम होगा। अंदर क्या होगा तुम्हारा? वैक्यूम होगा। यहाँ पे सर्टेन होल है, सो दैट होल आई एम ड्रॉइंग हियर। सो दिस इज द होल एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इस होल को आप ऐसे दिखा लो। थ्रू द होल पैरेलल बीम ऑफ लाइट is allowed to pass. The spread of a spot on the opposite wall of camera, that is on this wall, is assumed to be the sum of its geometrical spread and the spread due to diffraction. So what will be the spread due to diffraction? ये क्वेश्चन को आप ऐसे ले जाओ, this is the radius, I mean this is the hole, and then this is, I mean this light is going to spread on the wall, that is you are going to get diffraction pattern. So central maxima का spreading में डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे कितना होगा स्प्रेडिंग? आपको भी पता है, दिस विल बी दिस वे लैम्डा बाई ए एंगल, दिस वे लैम्डा बाई ए एंगल। सो ओवरऑल स्प्रेडिंग इज हाउ मच? 2 lambda by a, and if this length is L, then this spreading is equal to 2 lambda by a into L. ओके, सो दिस इज द स्प्रेडिंग। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द स्प्रेड ऑफ अ spot on the opposite wall of camera is assumed to be sum of its geometrical spread and spread due to diffraction. So यहाँ पे जो स्प्रेड है, ये सपोज करो इतने एरिया में स्प्रेड करता है, ये लेंथ तुम्हारा ज्योमेट्रिकल स्प्रेड और डिफ्रैक्शन स्प्रेड दोनों सम के बराबर है। सो डिफ्रैक्शन स्प्रेड तुम्हारा कितना मिला? 2 lambda by a into L. व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिकल स्प्रेड? सो ज्योमेट्रिकली देखो, अगर तुम्हारा टॉर्च का एरिया ये है तो इससे जो लाइट जा रहा है ये इतने ही रीजन में स्प्रेड कर रहा है, इतने ही लेंथ में वो जाएगा। डिफ्रैक्शन होता है तब तुम्हारा बेंडिंग होता है और इसलिए लाइट का स्प्रेडिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है इससे, डन है। बट ज्योमेट्रिकल स्प्रेड की अगर आप बात करो तो वो सिंपली जो तुम्हारा इस होल का लेंथ है उसी लेंथ में वो स्प्रेड करेगा ज्योमेट्रिकली, ओके। सो ज्योमेट्रिकल स्प्रेड विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस वन, दिस होल, सो दैट इज इक्वल टू 2a. सो दिस इज द स्प्रेडिंग ओवरऑल। Now the spot attains its minimum size b minimum when. So b minimum का वैल्यू क्या होगा? अब देखो हमें चेंज क्या करना है? Let me check here. I mean, okay. So the spread of a spot on the opposite wall is assumed to be this and this. The spot attains its minimum value when. So for it to be minimum, I mean, what we can do? I mean. Okay, so something we need to consider as a variable. Done it? So let us check carefully. ओके, सो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया है, बट आप ऑप्शन से देखो ए का वैल्यू गिवन है। सो बी मिनिमम के लिए ए क्या होना चाहिए, यानी कि ए को वेरिएबल ट्रीट करना है हमें। सो दिस इज द स्प्रेड थिंग, ओके, सो दिस इज द स्प्रेड। इसको आप मिनिमाइज करो बाय टेकिंग ए एज वेरिएबल। सो व्हाट यू विल बी डूइंग? यू विल बी डूइंग सिंपली ds बाई डी ए इज इक्वल टू 0। सो ds बाई डी ए आप कर लो, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम माइनस 2 लैम्डा एल by a ka square, and this is equal to 0. Okay, so I mean we will be getting single value of a here, 2 will get cancelled, and a square is equal to lambda L sort of. So a is equal to how much? A square is equal to lambda L, so a is equal to root under lambda L. Now put the value of a is equal to root under lambda L.
in the expression for S you will be getting spread minimum. Okay, so A का वैल्यू तो ये होना चाहिए. अब देख लो ऐसा ऑप्शन है, दो है क्या? हाँ दो है. सो बी मिनिमम भी आपको सॉरी स्प्रेड मिनिमम भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज बी मिनिमम. सो 2 लैम्डा बाई ए इंटू एल. सो 2 लैम्डा बाई ए दैट इज रूट अंडर लैम्डा एल इंटू एल यहाँ पे है, प्लस ए सॉरी प्लस 2a था. डन है. सो 2 इंटू रूट अंडर लैम्डा एल. आप ध्यान से देखो ये रूट अंडर लैम्डा एल से lambda L cut होगा 2 root under lambda L. So this is 4 root under lambda L. So B minimum is going to be how much? That is going to be root under, okay, let me check, 2 lambda by A, and that was, okay, that should be 4 root under lambda L, है ना? Let me check with the, I mean options that I have taken. Just give me some time, okay. लेट मी चेक. सो एक्चुअली इन द क्वेश्चन आई मीन देखो टोटल स्प्रेड अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे तो मिनिमम इतना ही मिल रहा है ना, 4 लैम्डा एल. लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, डन है, तो वी कैन टॉक अबाउट रेडियस ऑफ द स्प्रेड. ओके, सो डायमीटर हमें दिख रहा है, डायमीटर हमें मिनिमम कितना मिला है, दैट इज योर 4 रूट अंडर लैम्डा एल. रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेडियस हो जाएगा 2 रूट अंडर लैम्डा एल. सो रेडियस को चेक कर लेते हैं क्योंकि क्लियरली स्पॉट अटेन्स इट्स मिनिमम साइज. साइज की बात किया था, मैंने सोचा ये डायमीटर लेकर चलते, बट डायमीटर ऑप्शन मैंने दिया है, रेडियस की बात हो सकती है. हाफ ऑफ दैट, सो 2 lambda l root under lambda l. So that will give you option third as the correct. So C will be your correct option. अब देखो ये C is correct. ठीक है. So I hope you have got that question. Now let's move with this one. On a hot summer night, the refractive index of air is smallest near the ground and increases with height from the ground. When a light beam is directed horizontally, the Huygens principle leads us to conclude that as it travels, the light beam. So as it travels, what will happen with the light beam? So this is simply a question from ray optics also you can say. You can clearly answer this. So you should pause it the video here and you should try drawing the things. सो आई मीन रे ऑप्टिक से आपने इसको सॉल्व किया होगा, आपको भी पता है ये कैसे बेंड करेगा. ठीक है, कीपिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिंग इन योर माइंड, बट लेट अस डू इट यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल. सो सपोज कर लो यहाँ पे हमने दो लाइट्स लिए. ठीक है, सो ऐसे हॉरिजेंटली दो लाइट्स लिए and these two lights are striking this media. I mean this media where refractive index is gradually increasing as we are going up, right? So increases with height from the ground. Yes, सो म्यू इज इंक्रीजिंग. डन है. अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ये इस मीडिया को स्ट्राइक कर रहा है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट आफ्टर t टाइम. आई मीन ये लाइट्स ऐसा है, तो t टाइम के बाद ये लाइट कितना डिस्टेंस गया होगा और ये लाइट, आई मीन लेट अस कॉल इट फर्स्ट लाइट एंड लेट अस कॉल इट सेकंड लाइट. सो फर्स्ट लाइट थोड़ा नीचे हाइट पर है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. सो यहाँ पे ये लाइट तुम्हारा कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? कम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर, एंड इफ स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर ये टी टाइम में ज्यादा चलेगा और ये टी टाइम में तुम्हारा कम चलेगा. सो अगर अब आप वेव फ्रंट बनाओ, पहले वेव फ्रंट ऐसा है, अभी आप वेव फ्रंट बनाओ तो आप ऐसे बनाओगे. सो वेव फ्रंट इज समथिंग लाइक दिस, something like this, and for this corresponding if you draw the light direction, लाइट डायरेक्शन क्या होगा इससे परपेंडिकुलर. सो इससे परपेंडिकुलर आप कुछ ऐसे बनाओगे, इट मीन्स लाइट इज बेंडिंग अपवर्ड. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी योर सी, it will bend upward. So I hope it is clear. Now this question, I mean this is so simple, so this question you will be doing, and this one again I have told you this one in the concept also. जब तुम्हारा slit separation D is kept, I mean these two slits are kept in such a way that this line is perpendicular to the screen. Done है. Then you will be saying fringes will be what concentric circles. So I mean mathematics में we don't need to go at JEE Mains level, so keep it simple. Correct option will be your D1. Okay, so this is this thing. अब देखो यहाँ पे भी simple, तुम्हें कुछ नहीं करना है, simply formula put करना है and you have to get the answer. So again I am leaving this on to you. Now in Young's double slit experiment using monochromatic light source, the shape of interference fringes hyperbola I have told you, and on the screen is this, and if approximation that is D far less than capital D you are taking, we can say that is planar. Okay, so that is this thing. Now this is the last thing. To demonstrate the phenomena of interference we require two sources which emit radiation of what? Same frequency, coherent light we require. So correct option will be which one? It should be B.
I hope you are clear with all the questions and I hope you have learned a lot in this session. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself and keep on preparing for your exam and all the very best. Thank you. Bye bye.